So let's start with the extrapyramidal symptoms. So what happens is extrapyramidal, there are few, like there are five kinds. There are five kinds of extrapyramidal symptoms जो होते हैं while taking the antipsychotic drugs. Okay, so क्या क्या है वो, let's see. And let's see वो कौन कौन से हैं. तो extrapyramidal symptoms में there is acute muscular dystonia, which is the first one to appear. And benzyxol obviously is a drug of choice. And then we have akathisia. Akathisia, it's the most common extrapyramidal symptom. वो वाला earliest था, this is the most common extrapyramidal symptom. इसमें propanol देते हैं, benzyxol देते हैं. Then Parkinsonism obviously, because because we are trying to decrease the dopamine receptors in antipsychotics. Parkinsonism is basically that. उसमें यही होता है, उसमें जो डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं दे आर लेस. उसमें डोपामीन ही नहीं प्रोड्यूस होता. तो दैट, सो benzyxol we are giving, it's drug choice. So अभी तक तो benzyxol is there. Benzyxol, tardive dyskinesia, which is because of the valproate also. And क्या होता है उसमें उसमें um, उसमें जैसे jaw movement, jaw and mandibular movement होता है uncontrolled. तो it's a very late symptom that appears due to supersensitivity to dopaminergic. Valbenazine is the only drug approved, but इसमें हम benzyxol नहीं देते हैं. It's contraindicated. In fact, malignant neuroleptic syndrome can be life-threatening. Dantrolene हम इसमें देते हैं to relax the muscles, and हम इसमें benzyxol और bromocriptine they're also indicated. Now other uses क्या होते हैं antipsychotic के. तो ऑब्वियसली एंटी एमेटिक हो सकते हैं, साइकोटिक हो सकते हैं, साइकोसिस में हम देते हैं, कोरिया में देते हैं, एंड टिक जैसे ट्यूरेट सिंड्रोम बोलते हैं, गिले-डाला ट्यूरेट सिंड्रोम, ट्यूरेट. तो एंटीसाइकोटिक्स हम उसमें देते हैं. ट्यूरेट में क्या होता है, जो पेशेंट दे हैव अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होता है हैंड्स का, अनकंट्रोल्ड हैंड्स, लेग्स, एनीथिंग. दे sort of. And now antipsychotics, they're used in the acute mania and bipolar disorders. Atypical, जो olanzapine, they are drug of choice for acute mania and pregnancy. प्रेगनेंसी में हम olanzapine दे सकते हैं. Haloperidol is also safe, and these agents can be used as an alternative to ECT in severe depression with psychotic features. Alcoholic hallucinations uses है सारे. अल्कोहल में अगर हेलुसिनेशन हो रहा है तो एंटीसाइकोटिक दे सकते हैं. अगर ये ट्यूरेट सिंड्रोम, हंटिंगटन कोरिया में भी देते हैं एंटीसाइकोटिक्स. अनकंट्रोल मूवमेंट होता है इसमें. नाउ ट्रीटमेंट ऑफ टिक डिसऑर्डर्स. तो tetrabenazine is a drug of choice. Antipsychotic, both typical टिप क्या haloperidol और पाइमोसाइड आ जाता है.
and atypical में aripiprazole and risperidone. They can also be given. Alpha 2 agonists like clonidine, they are most commonly used agents. Alpha 2 agonist, clonidine देना है, clonazepam, carbamazepine, and local injection of botulinum toxin are also indicated. Haloperidol and flufenazine, they are typical only, are most potent atypical antipsychotic drugs, whereas risperidone is the most potent atypical. अगर हम पोटेंसी की बात करें तो haloperidol or flufenazine, they are most potent in typical category, and in atypical category risperidone is the one. Now the extrapyramidal adverse effects are negligible with clozapine, quetiapine, and aripiprazole. Now chlorpromazine, thioridazine, and clozapine. They possess the strongest anticholinergic activity. Strongest anticholinergic activity. Flufenazine वैसे तो क्या होता है enanthate and decanoate, मतलब flufenazine enanthate and flufenazine deconate and haloperidol deconate, they are long acting. तो हम उसको SC और IM देते हैं subcutaneous or intramuscular. They're obviously typical antipsychotics, and risperidone and paliperidone, they're typical antipsychotic. They are available in long-term injectable form. Long term. So जो IV रूट से हम यूज़ करते हैं, तो ये जो हम ये सब यूज़ कर रहे हैं haloperidol, ठीक है हम इससे आम तो दे रहे हैं, बट IV जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं that is haloperidol. It's most commonly used. Ziprasidone, aripiprazole, acenapine, iloperidone. There are negligible risk of causing metabolic. Ziprasidone, aripiprazole, acenapine, iloperidone. तो weight gain, hyperlipidemia and diabetes mellitus, ये तो एंटीसाइकोटिक का एडवर्स इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है ही, तो वेट गेन ये तो होना ही है. तो एसिनापिन, पैलिपेरिडोन एंड दे आर द ग्रेटेस्ट पोटेंशियल बट दे प्रोलॉन्ग द QT इंटरवल. एसिनापिन हमने किया ना, एसिनापिन, पैलिपेरिडोन, सिप्रा. Now antidepressant drugs. So according to the latest research, depression is associated with decreased level of brain-derived neurotropic factor. तो ब्रेन में ही फैक्टर है न्यूट्रोट्रॉपिक फैक्टर, but it has decreased level of this, तो which is critical for regulation of neural plasticity. तो neural plasticity नहीं हो पा रही है, there's no neural plasticity and there's no neurogenesis. तो डिप्रेशन में neuroplasticity and neurogenesis, these are inhibited, which is very bad. Plasticity, nobody should be depressed, nobody. These are inhibited. And the chronic activation of monoamine receptors. So there's a receptor 5-HT and a receptor by antidepressants, इनसे होता है.
इनसे एक्टिवेशन हो जाता है by antidepressant result in increase in the BDNF transcription. Yes, which is required. Another method for treatment of depression is to inhibit the metabolism. इसका हम मेटाबॉलिज्म बंद कर सकते हैं और we can activate 5-HT receptors और benefit in the exam glycogen synthase kinase GSK. तो GSK 3 तो हम क्या करें अगर हम इसको इनहिबिट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट BDNF ये इसको मेटाबोलाइज कर रहा है तो इसका मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो it will be there for a longer period of it will act for a longer period of time. This action is produced with lithium. Now till date the best hypothesis assumed is that the depression results due to decreased monoaminergic मतलब this is the best hypothesis till date 5-HT और Na receptors की receptor न्यूरोट्रांसमीटर की डिक्रीज से डिप्रेशन रिजल्ट होता है and therefore drugs increasing their activity are called antidepressants and drugs acting by other mechanisms are called atypical antidepressants. So लिथियम ऑब्वियसली यदि ये इनहिबिट करता है और ये इसका ब्रेक डाउन इनहिबिट करता है तो ये ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो रहा है ड्रग्स that increase the monoamine transfer TCA MAOI inhibitors SNRI तो chronic activation हो जाता है तो neural plasticity and neurogenesis they are increased. Now antidepressants these are the typical ones and these are the atypical ones. So MAO inhibitors they are non-selective and selective MAO inhibitors moclobemide trannyl cyclopramine isocarboxazide and phenelzine. These are the non-selective. Selective MAO inhibitors is meclobemide जो हम डिप्रेशन में यूज करते हैं सिलेजुलिन और वो सब तो है ही वो सब तो है ही but these are the ones that we use in depression. So MAO inhibitors and also they are MAO-B inhibitors और ये MAO-A inhibitors हैं reuptake inhibitors ये आ गया सेलेजुलिन रासाजुलिन ये तो हम उसमें यूज करते हैं ना पार्किंसोनिज्म में शायद yes now non-selective 5-HTN plus Na inhibitor मतलब inhibitors हैं TCA imipramine and amitriptyline imipramine and amitriptyline oops ये रहा amitriptyline antidepressant venlafaxine and duloxetine and milnacipran mil, milnacipran duloxetine venlafaxine oh my gosh fluoxetine paroxetine fluvoxamine sertraline and citalopram. These are very weird drugs. These are selective SSRIs and these are non-selective SSRIs. Now atypical. So what is happening? Not they're not involved in the pathway, but they are acting in other ways. So 5-HT2 antagonist. So trazonafazodone. There is presynaptic alpha 2
antagonist of myosin and mirtazapine increased presynaptic release of the catecholamine, which is bupropion, serotonin uptake inhibitors, which is tiniptin and am- aminaptine. 5-HT1 antagonist with serotonin reuptake inhibitor reuptake नहीं होने देगा, which is vortioxetine and vilazodone. Now sodium, sorry, selective noradrenaline reuptake inhibitor, which is atomoxetine. So there's a lot of, you can see इसमें भी a lot of done and pine आ रहा है last में. इसमें भी आ रहा है वैसे pine. It's not an indicator. Now typical antidepressant. तो typical antidepressant कैसे act करते हैं? They have told this in this diagram, which is going to be important obviously. So typical antidepressants, they are the drugs. They may increase the monoaminergic transmission by inhibiting the metabolism or reuptake. Reuptake नहीं होने देता है, and it will inhibit the metabolism of amino inhibitors. These are the two ways in which they will act. तो यहाँ पे माओ इनहिबिटर्स हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, सोडियम सॉरी noradrenaline it is being released. ठीक है, it has to act on alpha 1 beta receptor. But normally होता है. Now what is happening is इसका reuptake हो सकता है, which is inhibited by SNRI and TCA. SNRI, which is the non-selective, TCA, ये TCA and SNRI, ये दो है ना, non-selective TCA and SNRI. They will prevent the reuptake. Okay. MAO inhibitors will inhibit MAO. This and myosin and mirtazapine. They will inhibit the alpha 2 receptors यहाँ पे. तो यहाँ पे नहीं act करेगा ये. This won't act here. This will act here. But that is okay. तो क्या हो रहा है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा इनका क्या काम है, ये नहीं समझ आ रहा. They're inhibiting the alpha 2 receptors, ये तो मैं समझ गई. Presynaptically बस करेंगे क्या, ऐसे कुछ कहाँ है मॉर्टन सा, ये है presynaptic alpha 2 antagonist या presynaptic. Now SNRIs है TCA, NET. Now 5-HT normally क्या हो रहा है, 5-HT में 5-HT is released and then they are taken up by the receptor. Now 5-HT2, तो 5-HT2 receptor को inhibit करता है trazodone and nafazodone. ठीक है, and the reuptake is inhibited by TCA, SNRI and SSRI. Selective. Hmm. Yes.
और ये भी प्री साइनेप्टिकली यहाँ पे इनहिबिट हो रहा है, ठीक है। जो इसको माओ को इनहिबिट करने वाले हैं, इससे सारा इस रीअपटेक इज इनहिबिटेड, रीअपटेक इज इनहिबिटेड, दिख रहे हैं तो दैट। और ये 5H2 जो है, 5H2 ट्राजोडोन और नेफाजोडोन, ये पोस्ट साइनेप्टिकली इनहिबिट करते हैं। 5H2 एंटागोनिस्ट, ये रहा 5H2 एंटागोनिस्ट, ये कर लिया। प्री साइनेप्टिक ये भी हो गया। नाउ इम्यून इनहिबिटर्स, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोनो, ए एंड बी, ये तो हमें पता ही है। ए एंड बी involved in the metabolism of the monoamines. और जो MAO predominantly metabolizes this noradrenaline 5-HT and DA and is present in the intestine present है, peripheral nerve endings में present है, मतलब MAOB it is preferentially metabolizes the dopamine. That is why जो ये है brain platelet liver में तो होता ही है, that is why ये पार्किंसोनिज्म में दिखता है। नाउ नॉन सेलेक्टिव एमियो इनहिबिटर्स में क्या क्या है, नॉन सेलेक्टिव है ना, तो सेलेक्टिव थे नॉन सेलेक्टिव, ट्रानल साइप्रोमीन, आइसोकार्बोक्सिलाइड एंड फेनाल्जीन, ये नॉन सेलेक्टिव है। ये तीन ट्रानल, ट्रानल साइप्रोमीन, ट्राइनल साइप्रोमीन, आइसोकार्बोक्सिलाइड, फेनाल्जीन। तो ट्रानल साइप्रोमीन, isocarboxazide and phenelzine. These are the three drugs that are non-selective amino inhibitors, and these actually inhibit both isoforms of the amino inhibitors. A and B dono are inhibited by these, and that's why they are non-selective, right? Their antidepressant effect takes 3 to 4 weeks to develop. तो हमें वेट करना पड़ेगा 3 to 4 weeks, उसके बाद ही दवाई का असर शुरू होगा। These drugs exhibit a large number of drugs and food interaction. तो बहुत सारा food interaction और इसमें drugs वगैरह should be contraindicated because बाहरी interaction है। An important ones are cheese reaction obviously, इसमें hypertensive crisis होता है, तो cheese, beer, red wine obviously tyramine contain करते हैं, तो they are indirectly acting sympathomimetic. So normally it is metabolized by MAO, normally present in the intestine obviously, and it is not absorbed. तो क्या हो रहा है, ये टायरमीन तो है sympathomimetic and it metabolizes MAO, ठीक है, intestine में present होता है। तो if we are giving the MAO inhibitors and it is actually trying to metabolize the MAO, तो क्या होगा, there will be a reaction and it's not absorbed. If the person taking non-selective amino inhibitors, tyramine escapes degradation and can lead to hypertensive crisis. इसका degradation नहीं हो पाएगा because हम inhibit कर रहे हैं, हम inhibitors ले रहे हैं, तो इसका तो degradation नहीं हो रहा है, तो hypertensive crisis हो जाएंगे because of the tyramine. Okay.
This is known as cheese reaction. So cheese, etc., should not be given to the patient on long-term non-selective MAO inhibitor and phentolamine as the drug of choice for cheese reaction. तो अगर किसी को चीज रिएक्शन हो गया है, चीज रिएक्शन चीज रिएक्शन हो रहा है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? फेंटोलामीन. फेंटोलामीन. Now, non-selective जो MAO inhibitors हैं, they have increased risk of seizures also if given along with pethidine due to enhanced generation of excitatory metabolic normeperidine metabolite. तो normeperidine metabolite normeperidine, it's an excitatory metabolite. किसका? पैथीडीन का. तो अगर नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स दे रहे हैं हम तो सीजर भी हो सकता है. अगर हम पैथीडीन अगर ओके लेट्स जस्ट फोकस. पैथीडीन भी है, हम पैथीडीन दिया, पेशेंट इज ऑलरेडी टेकिंग पैथीडीन, वी आर गिविंग एमएओ इनहिबिटर्स, तो इसमें सीजर हो सकता है बिकॉज पैथीडीन इज एक्चुअली इसका जो मेटाबोलाइट होता है विच इज एक्साइटेटरी इन नेचर. नॉरमेपेरिडीन तो ये तो नहीं होगा डिग्रेड बिकॉज हम इनहिबिटर्स दे रहे हैं और तो हाँ सीजर बन सकता है. एंड नाउ सेरोटोनिन सिंड्रोम. सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है? चीज रिएक्शन हो गया, सीजर. It is given if it's given along with or just after discontinuation of MAO inhibitors. MAOI दे रहे हैं हम इंसान को अगर if it is even given just after the discontinuation, तो क्या हो रहा है? SSRIs can result in serotonin syndrome. To avoid this fetal, we have to at least wait for 14 days. तो हम 2 weeks at least वेट करेंगे after discontinuation of the MAO inhibitors. तो it gives us a sufficient time for regeneration of MAO. तो हम MAO तो inhibit कर रहे हैं, वो 2 weeks तक चलेगा. 2 weeks तक चलेगा वो. तो regeneration भी तो चाहिए हमें, तो उसके लिए 2 weeks लगते हैं. तो हम SSRIs नहीं देते हैं. तो सेरोटोनिन सिंड्रोम